In this video, we are going to cover about the factors that are affecting the rate of enzyme action. And the subtopic that we are going to cover in this video will be the introduction, properties, explanation, and then there is a quiz for you guys in the end. So let's begin. The first thing is that the functional capacity of every enzyme is the consequence of its chemistry and configuration, right? Chemistry and configuration. So any factor that can alter the chemistry and shape of the enzyme can also affect its rate of catalysis. There are some of the important factors that can alter the rate of enzyme action. The first one out of them is the enzyme concentration. So the rate of a reaction, It depends directly. It depends directly on the amount of the enzyme present at a specific time at unlimited substrate concentration, right? Amount of enzyme at a specific time at unlimited substrate concentration. राइट सो द रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है क्या अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है जब हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ रही है अगर तो अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज होती है 2 टाइम्स ठीक है अगर जो हमारे पास रेट ऑफ अवेलेबल एंजाइम है हमारे पास अमाउंट ऑफ एंजाइम है वो आप 2 फोल्ड कर रहे हो अमाउंट अगर 2 टाइम्स होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगा हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी डबल हो जाएगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा ठीक है और अगर हम बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एक्टिव साइट टेक प्लेस एंड मोर एक्टिव साइट नाउ विल कन्वर्ट द मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू द प्रोडक्ट ठीक है गिवन द पीरियड ऑफ अ टाइम आफ्टर अ सर्टेन लिमिटेड कंसंट्रेशन अगर एक ऐसा पीरियड आता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ लिमिटिंग कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन will no longer depend upon this increase ठीक है so as you can see in this graph the rate is directly proportional to the concentration right so this is the first factor that affect the rate of enzyme concentration the second one is the substrate concentration सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ये है कि एट लोअर कंसंट्रेशन जब लोअर कंसंट्रेशन होती है of a substrate, the rate of reaction is directly proportional. It is directly proportional to the substrate that is available. ठीक है मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना सबस्ट्रेट हमारे पास रह जाएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस पर डिपेंड करेगा ठीक है उसके बाद अगर इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन अगर हम एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसे कांस्टेंट रखते हैं और सबस्ट्रेट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन एन इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर एज यू कैन सी हेयर in this diagram this is the rate of reaction this is the substrate concentration ठीक है यहाँ पे अगर हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन को हमने एक अमाउंट पे कांस्टेंट कर लिया है हम जितनी मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है इसे इंक्रीज करते जा रहे हैं the reaction rate will not increase anymore why because a high substrate level
at all the active site of the enzymes are occupied, and further increase in the substrate does not increase the reaction rate. जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जब हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को एक कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हम जितना मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लें, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, ये हमारा सेकंड फैक्टर था दैट इज इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. After that, there is the quiz time, and the first MCQ that we got for today is that enzymes are highly dash in nature, energetic, specific, motile. As we all know that every enzyme is different and it is highly specific in nature, so here specific is the correct answer. The second MCQ for today is that at lower concentration of substrate, the rate of reaction is directly proportional to the dash, to the enzyme available, to the substrate available, to the active site available. As we have just learned, if we move a little back, here, that rate of reaction is directly proportional to the substrate available. So here the correct answer will be the second option, substrate available. So this conclude the end of our today's lecture. If you guys got any queries, you can ask them below and I'll get back to you as soon as possible. And thank you so much for watching.